टॉपिक विच आई एम टीचिंग आफ्टर दिस आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी हो गया एक सेक्शन, सेकंड सेक्शन में आपका सेकंड टेस्ट होगा, सो बी रेडी फॉर दैट पार्ट। वैसे ही करेंगे, एक असाइनमेंट आपको दे देंगे और उसके बाद टेस्ट होगा। सो नाउ वी गो टू दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है ना, it comes what there are two types of effect, inductive effect and electromagnetic effect are there. So this comes under title electronic effect. तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इफेक्ट जनरेट होता है। दिस इफेक्ट्स आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सो अभी आपको सिग्मा, पाई, पोलार ये सब वर्ड्स क्लियर है। सिग्मा भी मालूम है, पाई भी मालूम है, पोलार भी मालूम है, तो ये वर्ड मालूम है। और तो बस यही वर्ड्स हम लोग को इसमें यूज कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट किसमें होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज पॉसिबल इन molecules which are having polar molecules, so which are polar in natures, molecules which are polar in nature. Then they should have sigma bond, polar sigma bonded molecules. So polar sigma bonded molecules में होगा मतलब मॉलिक्यूल should have positive नेगेटिव चार्ज और सारे बॉन्ड सिग्मा होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसमें ही पॉसिबल होगा। तो होता क्या है देखिए इस इफेक्ट में। होता क्या है देखिए, ये लिया मैंने कंपाउंड CH3 CH2 CH2 Cl। so Cl is a halogen, halogen है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स ये अल्काइल ग्रुप के पास चार्ज का होता है पॉजिटिव चार्ज, ये अल्काइल ग्रुप के पास चार्ज होएगा पॉजिटिव, हैलोजन नेगेटिव। तो हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर हैविंग अ टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज एज हैविंग टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैंने वर्ड पे जोर दिया, कौन से वर्ड पे जोर दिया? पुल। सो इट हैज एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये पुल करने को क्या बोलेंगे? एफिनिटी, अट्रैक्शन। सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर्स एंड दे पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस कार्बन, I'll mark this as carbon, first carbon, this is second carbon, 1 minute, I'll mark this carbon as first carbon, this is second and this is third carbon. So ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींचेगा। So electrons are moving from third carbon to second carbon, from third carbon to second carbon. अभी जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, it will develop a पॉजिटिव चार्ज और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इट डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज। बट दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके तो नहीं जाता है, सो इट ट्रांसफर्स थ्रू दिस बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम टेक्स प्लेस थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड के पास भी थोड़े टाइम के लिए चार्ज डेवलप होता है, तो चार्ज डेवलप होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलर मतलब प्लस एंड नेगेटिव चार्ज और डेवलपमेंट होना, इसलिए पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स फ्रॉम अ कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम। अब ये सेकेंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे जाएगा वाया बॉन्ड, वाया अगेन सिग्मा बॉन्ड। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो थोड़े टाइम के लिए उस सिग्मा बॉन्ड पे क्या चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव, एंड हेंस पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड वापस होता है। अब फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये पूरा चार्ज अपने पास खींचेगा यहाँ पर, और ये प्लस और ये माइनस वाया सिग्मा। सो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस from a less electronegative atom to a more electronegative atom by polarization of sigma bond. By polarization of sigma bond is called as an inductive effect. It's called as an inductive. Yes. Sir, please explain again. हाँ, I'll repeat again. मैं बोलूँगा, वापस से बोलूँगा। पहले एक बार समझ में आ जाने दो आपको। क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है from one atom to another atom. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है?
from less electronegative element या less electronegative species to more electronegative species. So such shifting of electrons from less electronegative element, from less electronegative species to more electronegative species by polarization of sigma bond is an inductive effect, is called as an inductive effect. ये इफेक्ट एक बार हो गया तो हो गया, वापस रिवर्स नहीं आएगा. इसका मतलब दिस इफेक्ट इज व्हाट? अ permanent effect. This effect is a permanent effect. It is represented by capital letter I and arrow कैसे लिखा है? ये arrow, in between arrow. तो ये दिखाता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्पीसीज टू दिस स्पीसीज हो रहा है वाया सिग्मा बॉन्ड. बट ये जो ट्रांसफर है, it is limited only up to 4 sigma bond. मैंने 3 दिखाया है, 4 सिग्मा बॉन्ड तक पॉसिबल है. ज्यादा सिग्मा बॉन्ड होगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे ना, तो कम होते खत्म हो जाएगा. तो 4 कार्बन तक ये अच्छे से दिखाता है, उससे ज्यादा कार्बन एटम होगा तो नहीं दिखा पाता है. इट कैन नॉट शो मोर देन 4 कार्बन एटम हियर इज. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस, सो इफ इससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स खींच के लेके आया है, तो इट इज कॉल्ड एज रिमूव किया है. therefore this group is electron withdrawing group, withdraw किया है, निकाल के लेके आया है. so species which shows electron withdrawing group shows negative inductive effect, -I, negative inductive effect. और इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, so these groups are what? Electron donating group, and hence they show positive inductive effect. So the species which accepts the electrons towards itself and withdraws the electron towards itself are called as electron withdrawing group. They show negative inductive effect. And the species which are electron donating, they show positive inductive effect. तो इससे फायदा क्या होता है? The species which are showing negative inductive effect helps us to understand the acidic nature of the compound. More the inductive effect, more is the acidic nature. And if there are positive inductive effect, then less is the acidic nature. Less is the acidic nature. एक बार पूरा वापस अच्छे से बताते हैं. I'll clean the board and repeat again everything. So we are studying what? Inductive effect. So what is inductive effect? Let us see. Inductive effect is the effect in which shifting of electrons takes place via sigma bond. ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस वाया सिग्मा बॉन्ड. फिर दूसरा क्या होता है इसमें? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है. पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. फिर इट इज परमानेंट इफेक्ट. हो गया तो हो गया, रिवर्स नहीं होगा. Denoted by I and represented by forward arrow. तो इतना तो समझ में आया तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा. तो अगर मेरे में ये लेता हूं मॉलिक्यूल CH3 CH2 Br लेते हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन. हैलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये हैलोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींचेगा. इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज वाया सिग्मा बॉन्ड. सो इसे डोनेट किया प्लस चार्ज, इसे डोनेट किया प्लस चार्ज, इसे एक्सेप्ट किया माइनस चार्ज. दैट्स व्हाई पोलैरिटी इज enhanced. Polarity is enhanced in this, and such effect is called as a
इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया इसलिए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. So species which donates electrons shows positive inductive effect, and species which accepts electrons shows negative inductive effect. So groups like nitro, carboxylic acids, sulfonic acids, aldehyde, they show negative inductive effect. They show negative inductive effect. मतलब अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट है ना तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर. क्यों एसिडिक इन नेचर? बिकॉज़ दे शोज व्हाट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. Whereas groups like alkyl group, methyl ethyl propyl butyl, फिर amines group, बराबर, amine group, अगर ये सब प्रेजेंट है, alkoxy group मतलब ether, then they decreases the acidic character. Why? Because they shows what, positive inductive effect. They show what, positive inductive effect. और जितना ज्यादा alkyl group रहेगा उतना ज्यादा positive inductive effect जाता है. मतलब लीस्ट इज द एसिडिक कैरेक्टर. एक कार्बन एटम है और दो कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम वाला और दो कार्बन एटम वाले में एसिडिक नेचर कंपेयर करना है, तो दो कार्बन एटम वाला विल बी लेस एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू वन कार्बन, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम, more is the positive inductive effect and less is the acidic characters. More is the inductive effect and less is the acidic character. ठीक है, आपको कितना समझ में आया? मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको आंसर बताना है. लुक एट दिस क्वेश्चन. CH3, ये वाला एग्जांपल लिखा उधर, और ये out of these two structures which will show more negative inductive effect. Come on. Second one will show more negative inductive effect. Why? Carbon. Huh? Chlorine is more. Yeah, because of more the electronegative group, more it will accept the electrons and hence more it will show negative inductive effect. तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, and hence it will show more negative inductive effect. So this is about inductive effect. इसका opposite partner है electromeric effect. इसका opposite partner है electromeric effect. This effect is possible in pi bonds. यहाँ पर था sigma bond. This effect is possible in pi bonds. यहाँ पर either polarity is induced or polarity is enhanced. Induced का मतलब होता है डेवलप और enhance का मतलब होता है increase. Enhance का मतलब increase and induce का मतलब डेवलप. DEVLOP. तो यहाँ तो हम पोलैरिटी उसमें लेकर आएंगे, नया पोलैरिटी, या तो हम क्या करेंगे, उसमें पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे. सो आइदर द पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड और पोलैरिटी इज इंक्रीज्ड. फिर थर्ड, it is reversible. ये परमानेंट नहीं है, it is reversible. It is denoted by capital letter E and represented by curved arrow. Capital letter E and represented by curved arrow. Reversible है, इसलिए ये क्या है, temporary effect है. Reversible है, इसलिए temporary effect. And इसका एक है, it takes place in presence of reagent. Yesterday we had studied two types of reagent. Which are the two types of reagent?
nucleophile and electrophile. Very good. Yesterday we studied two types of reagent, nucleophile and electrophile. तो उनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, नहीं तो नहीं होगा. सिंपल एग्जांपल लिखते हैं हम लोग यहाँ पर. Let's see simple example here. Look to the example. So it is present 5 bond resistors. So here an example C double bond O. C double bond O is carbonyl group. तो इसके पास चार्जेस हैं बट पार्शियल चार्जेस है. तो इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है बट कंप्लीट चार्ज नहीं है, इनकम्प्लीट चार्जेस है. तो इनकम्प्लीट चार्जेस आर कॉल्ड एज partial charges. They are called as partial charges. So now when it is reacted with AlCl3. AlCl3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. तो रिएक्शन आ गया इलेक्ट्रोफाइल, इसके प्रेजेंस में होगा. तो ये कैसे होता है? AlCl ऐसे होता है AlCl3. So 2, 4 and 6 इलेक्ट्रॉन्स है Al के पास. कितने होने चाहिए Al के पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स. पर Al के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6. तो इसलिए क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे और क्या बताया मैंने? ये रिवर्सिबल है. तो एरो रिवर्सिबल, यू विल गेट स्विच. AlCl3 यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बट एकदम से शिफ्ट नहीं होगा. स्लोली स्लोली इट विल शिफ्ट. सो स्लोली इट विल शिफ्ट. हियर सर बोर्ड. यस सर बोर्ड के उस साइड लो ना. एडजस्ट. हां वन. सो व्हाट? ये जो इलेक्ट्रॉन सर लाइट आ रही है बोर्ड पे. व्हाइट आ रहा है. रुको मैं क्लीन करके इधर लेता हूं. लाइट आ रही है लाइट. हाँ ठीक है ना. I'll take it. C double bond O carbonyl group. It is having this way extra pair of electrons इनके पास. So partial positive and partial negative charge है. तो इसका हमको क्या करना है? चार्जेस एनहेंस करना है. एनहेंस मतलब इंक्रीज करना है. तो हमको यहाँ पर AlCl3 मिला है. AlCl3 लेंगे और रिएक्शन रिवर्सिबल है. AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा. दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव हियर और पाई बॉन्ड इधर जाएगा. तो कैसे हो जाएगा? ये यहाँ पर ऑक्सीजन और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो डॉटेड लाइंस. यहाँ पर डेवलप हो रहा है तो डॉटेड लाइंस. अभी तक कंप्लीटली गया नहीं है. सो दे आर हैविंग पार्शियल पॉजिटिव एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन किया पार्शियल नेगेटिव. पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. अब फाइनली क्या हो जाएगा? पूरा ट्रांसफर हो जाएगा. कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन और ये AlCl3. मतलब ये बॉन्ड पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा. ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड. तो ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर प्रॉपर हो गया. AlCl3 के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब माइनस चार्ज. कार्बन का इलेक्ट्रॉन है इसलिए प्लस चार्ज. तो प्लस और माइनस चार्ज पूरी तरह से डेवलप हो गया and hence you get this waves. अगर मैं रिएक्शन निकालता हूं तो यहाँ पर रिवर्स होगा. तो मन में क्वेश्चन ऐसा तो होगा, सर अगर ये वापस रिवर्स करना था तो हमने ये क्यों बनाया है? तो ये इसलिए बनाया कि C डबल बॉन्ड O पर डायरेक्ट अटैक मेनी टाइम्स इज नॉट पॉसिबल. तो उसके इनडायरेक्ट करना पड़ता है. तो उसमें हमने क्या किया? चार्जेस डेवलप किया. यस ये C डबल बॉन्ड बहुत बार है ना डायरेक्टली रिएक्ट करता नहीं है क्योंकि इसके पास पार्शियल चार्जेस है. तो इसको मोर रिएक्टिव करने के लिए हम रिएजेंट ऐड करते हैं. तो रिएजेंट की वजह से क्या हो जाता है? इसके चार्जेस कंप्लीटली डेवलप होते हैं. चार्जेस कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं. इसके लिए इस पे अटैक करना डिफिकल्ट है. एक बार वापस देखते हैं. विल टेक हियर C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड AlCl3. AlCl3 में क्या होता है? देखो AlCl3 तो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो Al के पास 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है. होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स ना.
Therefore, AlCl3 is electron deficient. Electron deficient, therefore it is a electrophile. So it accepts the electron. तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगी, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है। अभी तक प्रोसेस चल रहा है, इससे डॉटेड लाइंस और चार्जेस भी पार्शियल। अभी कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड एंड हेंस यू गेट दिस। तो इस चक्कर में क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी 3 हो जाती है, तो इससे प्लस चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया माइनस चार्ज। सो पॉजिटिव एंड माइनस चार्ज आर कंप्लीटली डेवलप्ड। सो किसी को भी अटैक करना है तो इस कार्बन पे आराम से अटैक कर सकता है। कि कौन अटैक करेगा, अभी न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये कार्बन प्लस चार्ज वाला है ना, प्लस चार्ज वाला है, तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो आराम से कार्बन पे अटैक करेगा एंड इट कैन गेट अटैच्ड टू द कार्बन एटम एंड हेंस दिस रिएक्शन इज डन। यहाँ पर कार्बन पे सिर्फ कार्बन पे अटैक पॉसिबल नहीं है, दोनों पे अटैक करेगा। इधर क्या करेगा, सिर्फ कार्बन पे अटैक कर सकता है। सो व्हेन यू वांट दैट द मॉलिक्यूल शुड रिएक्ट ओनली विद द कार्बन, एट दैट टाइम सच इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड एंड सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो वो रिएक्टेंट हो जाएगा, हम रिएजेंट निकालेंगे, ये वापस अपनी जगह पर ओरिजिनल। So that's why reagent is only for temporary purpose and hence we can reverse the reaction. Such effect is called as electromeric effect. It is a temporary effect. सबको क्लियर हो रहा है ये टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. चाहिए तो एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, देखो एक और एग्जांपल दिखाता है। ये लेस पोलर से मोर पोलर कर दिया, ये लेस पोलर से मोर पोलर। If I take one more example, ये क्या है, इथीन। इथीन इज नॉन पोलर इन मॉलिक्यूल, भी हमने देखा है अल्केन्स अल्कीन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, तो अल्कीन इज नॉन पोलर। नाउ आई विल ऐड हियर इज BF3, BF3 अगेन इलेक्ट्रोफाइल, और इसके पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। इस पाई बॉन्ड के शिफ्ट होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड अभी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर डॉटेड चार्जेस, ठीक है। फिर ये CH2 और यहाँ पर ये BF3 अटैच हुआ नहीं पूरा अभी तक, BF3 पूरा अटैच हुआ नहीं है, तो इसलिए डॉटेड लाइंस, दिस डॉटेड लाइन सेज दैट कंप्लीट रिएक्शन इज नॉट डन yet. This carbon is losing electrons, so it gets a plus charge and complete हुआ नहीं है, so partial positive charge and यहाँ पर partial negative। ये साइन आता है डेल्टा का, तो इसको हम पढ़ना है partial, partial negative, partial positive, partial negative। अब फाइनली क्या हो जाएगा, पूरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, you get CH2, single bond CH2, single bond BF3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए माइनस चार्ज, इसकी वैलेंसी कम है, यहाँ पर प्लस चार्ज, तो दिस वे प्लस एंड माइनस चार्ज डेवलप। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्या हो गई है, इंड्यूस हो गई है। सो वी कैन आइदर इंड्यूस द पोलैरिटी और एनहेंस द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बाय यूजिंग reagents. Such process is called as electromeric effect. So note down if you want to note down. I'll move further then. Shall I move further now? Yes or no? सो रहे क्या बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, 1 minute. Excuse me.
Now move to next topic, that is called as resonance. Resonance सबको अच्छे से आता है मेरे को लगता है, but we'll please learn it again. रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का मीनिंग होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। रेजोनेंस का मीनिंग होता है delocalization of ions or lone pair of electrons। डीलोकलाइजेशन का मीनिंग होता है मूवमेंट, घूमना, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, उसको हम बोलेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड और सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन। तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज बेंजीन। How many sigma and pi bonds are present in sigma benzene? Carbon carbon, carbon hydrogen, carbon carbon, sigma sigma pi। How many carbon carbon sigma bond are present? Carbon carbon sigma bond कितने हैं? 6. 6, very good। There are 6 carbon carbon sigma bond and carbon hydrogen sigma bond। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितना है? 6. 6, कार्बन हाइड्रोजन 6 and carbon carbon pi bond 3, correct? 3। So in all there are 12 sigma and 3 pi bond, 12 sigma and 3 pi bond in benzene। so ये 3 pi bonds है। तो हमने क्या बोला है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। आधा घंटा हो गया। तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एरो दिखाया है ना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है। तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वापस चलते रहेगा, ये अपनी जगह वापस जाएगा ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर हमको वापस ऐसा मिलेगा। तो दिस गोज ऑन कंटिन्यूअसली, ये चलते रहता है। एंड सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज resonating structure। such structures are called as resonating structures। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन स्पीड पकड़ लेगा, बहुत फास्ट चलने लगेगा। दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव एट अ ग्रेट स्पीड एंड हेंस we will then see what कि इलेक्ट्रॉन्स से गोल 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 घूम रहे हैं। एक्चुअली वो बॉन्ड ही है, पर हमें बहुत स्पीड में दिखा गोल दिखेगा। So this will be combination of this both structure, and then this structure is called as resonance hybrid structure। This structure is called as resonance hybrid structures। सिंपल एग्जांपल है फैन। देखो अपना, जब फैन का बटन चालू करते हैं, स्टार्टिंग में हमको 3 प्लेट्स दिखते हैं प्रॉपर्ली, तो 3 प्लेट्स घूमते हैं, बराबर है। बाद में जब स्पीड पकड़ लेता है तो पूरा एक गोल ही दिखता है। आर वी एबल टू सी 3 प्लेट्स? नो। हाँ, नो। सो बस वैसा ही है यहाँ पर, स्टार्टिंग में हमको दिखेगा, बाद में दिखेगा नहीं। तो इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ में थोड़ा सा फर्क पड़ता है यहाँ पर। सो ये सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल है तो 154 पिकोमीटर्स होता है यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड है तो 138 पिकोमीटर्स। 154 एंड 138। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 154, कार्बन कार्बन double bond length is 133 picometers। but when सब की जगह पर पाई बॉन्ड है अभी ना, ये पूरा गोल घूम रहा है, तो सबका बॉन्ड लेंथ सेम एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 138 पिकोमीटर्स। जब सिंगल बॉन्ड है 154,
pi bond है 133 but resonance में कितना होता है 138 and hence this is the most stable structure as compared to this. ये अभी प्रोसेस में चल रहा है ना, चल रहा है प्रोसेस में, तो दे आर रेजोनेंस हाइब्रिड. ये हो गया है पूरा स्टेबल है, that's why the resonance hybrid is stable structures. Clear? Can you understand this? We'll see some more examples if you want. Let us see. सर Yes. ये रेजोनेंस फिर से समझाओ ना, अच्छे से नहीं समझा. अच्छे से समझाते हैं. मैं और एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. और लेता हूं एग्जांपल्स. ये देखिए क्या है, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. ये किसका फॉर्मूला है? R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. क्या भूल गए क्या? ये किसका फॉर्मूला है? कार्बोक्सिलिक एसिड. हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अभी इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स को R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लिखा है. ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को वही लिखा है पर थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखा है. R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. और O के पास है ना 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपल्सरी प्रेजेंट है. O is having 2 lone pair of electrons. तो मैंने बोला यहाँ पर delocalization of sigma pi bond and lone pair. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ध्यान से देखना है. अभी क्या होगा, ये जो lone pair of electrons है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. This lone pair will shift here, and this pi bond will shift here. This pi bond shifts here. क्या ये lone pair इधर, pi bond इधर. और हमें स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा यहाँ पर? R C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और इधर क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक. और ये लोन पेयर पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? pi बॉन्ड OH. तो इससे इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया, इसके लिए प्लस चार्ज. इससे इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, इससे माइनस चार्ज. इससे इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, माइनस चार्ज, लॉस किया, प्लस चार्ज. क्या हुआ? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. लोन पेयर से शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड से शिफ्ट हुआ. पाई बॉन्ड मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब पाई बॉन्ड. तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन गया. बराबर है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई इसलिए प्लस चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसलिए माइनस चार्ज. इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? पोलर इन नेचर. कार्बोक्सिलिक एसिड becomes polar in nature. ये वापस रिवर्स करो, ये इधर आ जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये स्ट्रक्चर वापस मिलेगा. ये चलते रहेगा बार बार. सो दिस आर कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और इसका हाइब्रिड ऐसे आएगा RCOH इधर O. एक बार पाई बॉन्ड ऊपर, एक बार पाई बॉन्ड नीचे, पाई बॉन्ड ऊपर, पाई बॉन्ड नीचे. इसलिए हम ऐसे दिखाएंगे. एक बार माइनस चार्ज ऊपर, एक बार माइनस चार्ज नीचे. So this is the resonance hybrid of the structures. इसका वापस बताओ यहाँ पर. ये बेंजीन स्ट्रक्चर्स है. बेंजीन में कैसा है? पाई बॉन्ड्स होते हैं. पाई बॉन्ड्स, ये 3 पाई बॉन्ड है. तो पाई बॉन्ड is having opportunity to move from one place to another place. So they can move, they can shift. So this pi bond shifts here. ये इधर आएगा और ये इधर आएगा. तीनों अपनी अपनी जगह बदलेंगे. ये इधर, ये इधर, ये इधर. यहाँ पर कैसे आएगा? यहाँ पे, इधर और यहाँ पे. ठीक है? अब ये वापस अपनी जगह पे, ओरिजिनल जगह पर आएंगे. So they are moving, actually we can say to and fro. To fro, जाता है, आता है, जाता है. So oscillatory motion we can say. Shifting of electrons shows oscillatory motions. So they go and come, and finally you can see the structure this way. They are cancelling. So they are called as resonance string structures, and this is resonance hybrid. Clear? समझ में आ रहा है? सर सेकंड एग्जांपल फिर से समझाओ ना. हाँ, सेकंड एग्जांपल देखो. कार्बोक्सिलिक एसिड है और O के पास होता है लोन पेयर. ये एक्चुअली ऐसा है, हमारे कन्वेंशन के लिए ऐसा लिखा अपन ने. तो अभी O के पास लोन पेयर है ना,
तो लोन पेयर अंदर जाएगा तो इधर वैलेंस एक्स्ट्रा हो जाएगी, इसलिए पाई बॉन्ड शिफ्ट, इसलिए पाई बॉन्ड शिफ्ट। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 लोन पेयर का एक एक्स्ट्रा आ गया, और ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया पाई बॉन्ड। अब वापस रिवर्स, ये लोन पेयर इधर, पाई बॉन्ड यहाँ पर, तो ये एक आ गया। ये चलते रहेगा स्ट्रक्चर बार बार, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये, एक बार पाई बॉन्ड ऊपर, एक बार पाई बॉन्ड नीचे, पाई बॉन्ड ऊपर, पाई बॉन्ड नीचे, तो माइनस चार्ज इधर, तो ये चार्जेस बार बार ऊपर नीचे होते रहेंगे, and hence such structure is called as resonance hybrid structures। तो जो resonance hybrid structures होते हैं या resonance structures दिखाते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं compared to non resonating structures। इसमें resonance दिखाने की ताकत नहीं होती है, वो weak structures होते हैं या more reactive होते हैं, and the structures which shows resonance are more stable। और जितनी ज्यादा resonating structures होगा उतना ज्यादा stability बढ़ेगा। Less the resonating structures, less is the stability। Clear? चलो एक एग्जांपल पूछता हूं आपको मैं। CH3NH2, CH3NO2। So this is nitromethane, this is methanamine। इस स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकते हैं, CH3N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, O के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है यहाँ पर CH3NH2। तो out of the structures which will show resonance, First. or this one, First one. First. first one। Why first one will show resonance? Why first one will show resonance? I'm asking you the question। सर थर्ड वन। थर्ड तो है ही नहीं यार, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब बोल, ये नाइट्रोमीथेन, ये methanamine, out of this which will show resonating structures and why? Come on। सर फर्स्ट वन इट हैज पाई बॉन्ड। हाँ ये आंसर राइट है, परफेक्ट। फर्स्ट वन वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है ही नहीं, पाई बॉन्ड नहीं है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाएगा। तो अभी मतलब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। So what the species which are having pi bond will show resonating structures and did not have pi bond, so they will not show resonating structures। Getting it? Yes or no? Yes sir। Yes, sir. Okay, so we'll see further। यस सर। This is phenol। This structure is called as phenol and OH। Now O is having extra pair of electrons, O is having extra pair of electrons। So what it will do, it will donate this lone pair to the benzene ring। So what, electrons, pair of electrons, pair of electrons moves towards benzene। Pair of electron will move towards benzene। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, जैसे इधर आ जाएगा वैलेंसी इंबैलेंस हो जाएगी ना, इसलिए ये पाई बॉन्ड वहां निकलेगा। तो क्या होगा, इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो बेंजीन रिंग को डोनेट कर देगा और बेंजीन रिंग के यहाँ पर वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी तो इसका लोन पेयर बाहर हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा देखते हैं।
तो अभी क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आ जाएगा, तो OH इलेक्ट्रॉन्स पे इधर आ जाएगा, तो OH एक लोन पेयर गया, और ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये पाई बॉन्ड बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बाहर इन द फॉर्म ऑफ माइनस चार्ज। इसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, इसमें प्लस चार्ज, और बाकी का एज इट इज। ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया क्या? फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन इज हैविंग एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन्स इज पुल्ड बाय द बेंजीन रिंग and OH is donating extra valencies, so pi bond shifted here. First point suppose cleared, yes or no? Yes, sir. एक ही आवाज आया, हो रहे क्या माइक चालू करके? Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. रहे ना क्या? पार, आसावरी, आर्यन, यश, आनंद, आदित्य, निमिषा, are you sleeping or what everybody? No, sir. हो ना? हाँ, चलो किया। So अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी सिर्फ गोल गोल घुमाना है। Now this electrons will move here and adjacent बाजू वाले के पास जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर, और ये एज इट इज। अब वापस ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर, और ये एडजेसेंट पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर, ये एडजेसेंट पर। Now again this electrons move inside, और ये अपनी जगह पर जाएगा, ये अपनी जगह पर इधर OH, so this goes on continuously, इधर से इधर चलते रहता है, and hence such structures are called as resonating structures। इससे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, इसको इसके एक्सेप्ट किया towards the benzene, and hence it is called as positive resonance effect। This effect is called as positive resonance effect। Electrons are moving towards the benzene, and hence it is called as positive resonance effect। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे आएगा? OH सर्कल आएगा ना गोल अंदर, so this is the hybrid structure of phenol। so OH ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, OH has donated electron, so it is called as electron donating group, electron donating group। तो ये क्या दिखाएगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट? कम ऑन स्टूडेंट्स, क्या बात है मितांश? गुड। OH is electron donating group, that's why it shows what? Positive inductive effect, also it shows positive resonance effect। positive आपने लिखा ही था मैंने, it shows positive inductive effect and positive resonance effect। clear? understood or not? so Yes, positive yes, resonance effect क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया ना अंदर, so what? इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ रहा है? ये जस्ट बाजू वाला पोजीशन ऑर्थो, इसके सामने वाला पोजीशन पैरा, इसके बाजू वाला पोजीशन ऑर्थो। मतलब what happens? what is happening here is electron density increases at ortho and para position। what? in positive resonance effect, in positive resonance effect, the density of electron increases at ortho and para position, at ortho and para position, and hence they show positive resonance effect। आ रहा है समझ में सबको? yes sir। Yes, sir. और अगर यहाँ पर हम दूसरा ग्रुप यूज करेंगे, तभी मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। जो नाइट्रो बताया था मैंने, N,
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नाइट्रो, और यहाँ पर ये बेंजीन है। तो दिस इज नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन क्या करता है, नाइट्रो का नेचर कैसा है, EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा, क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ये कैसे था, टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो कैसे लिखेगा स्ट्रक्चर यहाँ पर, ON, ये इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बाकी का अंदर ऐसे बस। और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मतलब इस O के पास क्या होगा, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा। पहले से 2 लोन पेयर होते ही है, तो पहले से 2 पेयर है, एक एक्स्ट्रा आएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इससे माइनस चार्ज, यहां से डोनेट हुआ, इसमें प्लस चार्ज। ये समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट स्टेप एवरीबॉडी। यस सर। नाइट्रो इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इट विथड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स। खींचा है, इससे ये बॉन्ड ऊपर गया और ये इधर शिफ्ट हो गया। ये अगर फर्स्ट स्टेप समझ में आता है ना, तो आगे के स्टेप्स आपको इजी है, आगे से गोल गोल घुमाना ही है, दूसरा कुछ नहीं करना है। अब क्या हो जाएगा, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट हो जाएगा, एंड इट विल शिफ्ट वेयर, इट विल शिफ्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशंस। सो एडजेसेंट कार्बन नंबर चले जाएंगे, ये एडजेसेंट कार्बन पर जाएगा इधर, तो ये एडजेसेंट कार्बन इधर आ गया, इधर, तो ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट, बराबर। अब क्या हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो प्लस चार्ज इधर शिफ्ट। अब फाइनली ये इधर और ये अपनी जगह पर, ये इधर और ये अपनी जगह पर, ये इधर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N, double bond O, single bond O. You get this. So you can see the first and last structures are nearly same, or only the position of double bond is on the opposite side. तो क्लियरली बताता है कि रेजोनेंस हुआ है, इधर भी ऐसे ही हुआ था, तो रेजोनेंस हुआ है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग, अवे, therefore they show negative resonance effect. Electrons are moving away from the benzene ring, so they are showing what, negative resonance effect. Towards the benzene ring, positive inductive effect. So electron donating group shows positive resonance effect, and electron withdrawing group shows negative resonance effect. क्या, EDG shows plus R, and electron withdrawing group shows negative resonance effect, shows negative resonance. तो ये रेजोनेंस का मैंने आपको बहुत अच्छे से शीट्स में लिख के दिया है, व्हाट्सएप किया है, आप उसको रीड करो अच्छे से, लर्न इट, एंड henceforth we complete the chapter number 14 here. आपका चैप्टर नंबर 14 खत्म हो गया यहाँ पर, तो आप इसको रीड करो। नहीं, एक टॉपिक बाकी है, सॉरी, एक टॉपिक बाकी है, क्लासिफिकेशन बाकी है और होमोलोगस सीरीज बाकी है। So I'll take homologous series now and classification next lecture, and then we'll end the chapter. Are you writing, or I shall clean the board? चलो, Sir, 1 minute please. रुको सर। हाँ रुकता हूँ। ये मैंने आपको नोट्स में अच्छे से लिख के दिया है, सब कुछ रीड करो, थोड़ा टॉपिक 2-3 बार रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। This topic helps us to understand
whether the compound is acidic or basic. तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल करता है हमको ये. हो जाए तो बोल देना कि हो गया है. Done, students? Done, sir. चलो ठीक है. अभी इंटरेस्टिंग वापस वो थोड़ा बोरिंग का भी था. अभी इंटरेस्टिंग वापस. Look here. Come on. Speak the name of the compounds. चलो फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या है? मिथेनॉल. सेकंड Ethanol. इथेनॉल. और प्रोपेनॉल. Butanol. Butanol. what is the functional group? OH. Functional group is alcohol. Functional group is alcohol, and they are having general pattern, general formula CnH2n plus 1 OH. OH. Okay. Now इन दोनों को माइनस करो तो क्या मिलेगा? CH3 गया, OH गया, क्या बचा? CH2. हाँ, इन दोनों को माइनस करो. CH2 गया, CH2. CH2 CH2. minus this both. You get answer. CH2. So if I move in any series, the alcohol series लिया मैंने, the number of carbon atom is increasing. So they are successive members. So difference between two successive members is of CH2. Difference between two successive. Successive से मतलब मालूम पड़ता है? Successive म्हणजे लागोपाठ, एक के बाद एक, continuous. So difference between two successive members is of CH2. They have common functional group OH. Common functional group OH. Common suffix OL. Their chemical properties are same. Physical properties may differ. Such are called as homologous series. मराठीत याला समजात श्रेणी म्हणतो. समजात श्रेणी. इंग्लिश में homologous series. So members of same family, out of which two successive members, successive म्हणजे लागोपाठ, two successive members differ by CH2. They have common functional group, common general formula with the same suffix. Okay, such are called as homologous series. तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ले सकते हैं. मैंने अल्कोहल का लिया है, आप अल्कीन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइन, अमाइड्स, नाइट्रो, किसी का भी ले सकते हैं, सबका ऐसे ही आएगा. So such series followed by organic compounds is called as homologous series. ठीक है? बस अभी एक ही टॉपिक रह गया इस चैप्टर में से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. बाकी सब हो गया है. ठीक है?
So we'll complete this quickly and then we'll jump on the chapter number 15. So please revise at home, study very well. Thank you. Tata, bye bye. See you all. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Sir. हाँ बोलो. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Yes, they should have same functional group. Correct. Bye bye. Bye, sir. Thank you. Bye.